Alright, guys. देखो ये मेरा ऐप है, इसमें मेरे को कुछ सेटिंग्स और डालनी है यार। मेरी मैकबुक हक रही है भाई, इतना क्या लोड पड़ गया है। गूगल क्रोम बेटे, गूगल क्रोम क्या चूतिया है ये भाई है। मैकबुक से मैं तंग हो गया हूँ भाई अब। चूतिया कुछ भी करता है, बेसिक सेटिंग से सही से नहीं चलती। पहले करते हैं थोड़ी सी कोडिंग। ओके, थोड़ी सी कोडिंग करते हैं पहले। चलो तुम तो क्या ही देखोगे कोडिंग को। क्या मैं स्पेस बार वो दबा के कर सकता हूँ क्या? इसे पर नहीं दबाना ना, मैंने कहीं पे तो ये सेटिंग्स डिसेबल की थी स्पेस बार की। यहाँ पे तो नहीं है यार ये सेटिंग। पता नहीं यार मैंने कहाँ पे डाली ये सेटिंग। कहीं पे तो थी। ये इधर है क्या? ओके ओके, ये मैंने ओके। अलाउ सिंपल चेंज, ओके ओके। research on it thoroughly plan। मैंने वो फॉल्स पे रख के यार मेरा ये लैग क्यों हो रहा है इतना। फिर मेरा कैमरा इतना अनरिस्पॉन्सिव क्यों है। व्हाट द फक बे। मैं कितना सीपीयू यूज कर रहा हूँ बे। ओ जाने जाना। सीपीयू तो इतना यूज नहीं हो रहा है जो, ना ही रैम इतना यूज हो रहा है। लेकिन ये हग क्यों रहा है इतना। व्हाट द फक भाई। ये हग क्यों रहा है इतना भाई। यूज बफरिंग। बफरिंग क्यों। बफरिंग नहीं चाहिए मेरे को। लाइव चाहिए लाइव। नो बफरिंग। लाइव। let's see, running out। मैं सोच रहा हूँ कि इसी ऐप में मैं यूएस के स्टॉक्स भी ट्रैक कर लूँ। सेटिंग्स में इधर एक नई सेटिंग्स डाल दूँगा। नई सेटिंग, इससे वो भी ट्रैक चेंज कर पाऊँगा मैं सिंबल्स को। भाई इतना लैग क्यों कर रहा है। ये क्या हो रहा है भाई।
व्हाट द फक ब्रो, इतना लैग क्यों कर रहा है? इतना तो नहीं होना चाहिए। ना ही रैम मेरा यूज हो रहा है, ना ही सीपीयू यूज हो रहा है। सीपीयू यूसेज सिर्फ 12% है, रैम येलो में चल रहा है, कंप्रेस्ड में, फिर भी इतना लग, what the fuck bro, इट्स मैकबुक, इट शुडंट डू दिस। और मेरी सिर्फ 2K स्क्रीन चली है, 2K 60 हर्ट्ज चली है भाई, बहुत लो रेजोल्यूशन से। और स्ट्रीमिंग भी शायद 2K ही चल रही है मेरी। yes, देखता हूँ सेट। is 160 bit rate of audio, Apple HEVC hardware encoding, AC video is 1440p, resolution match, no downscaling, nothing, just 2K streaming right there. And still fucking so miserable my PC. What the fuck is this MacBook? To sell it man. भाई ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था यार मैकबुक से, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरा सेव का क्यों आ रहा है वहाँ पे बटन बेंच? सिर्फ सेव करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया। रिलोड मारा है, अब रिलोड में 10 घंटा लेगा। मैं तो इधर कुछ ट्रेड लेता, मार्केट एनालाइज करता, बुक पढ़ता। यूजर में इतनी कम ब्राइटनेस क्यों बे? यूजर में इतनी, व्हाट द फक, यूजर मोड में ब्राइटनेस कम है, रेसिंग में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है भाई। और पता नहीं अजीब से ग्रेनिंग इफेक्ट आ रहा है, लेकिन रेसिंग में ब्राइटनेस है। पता नहीं भाई इतनी कम क्यों ब्राइटनेस है यूजर मोड पे, ब्राइटनेस के। प्रो मोड, इको, यूजर, एंटी ब्लू, मूवी, ऑफिस, एस आर जी बी पे रखता हूँ ना, बेस्ट कलर्स के लिए। एच डी सी आर क्या है भाई? नो आइडिया। इमेज एनहांसमेंट नहीं चाहिए भाई यार, ब्राइटनेस इतनी कम क्यों है इसकी? आई मेरे को ऑलरेडी लेना चाहिए था एक्चुअली। हाँ तो सही है ब्राइटनेस। चैट जीपीटी ने क्या किया है जरा हम देखें तो सही। 5 सेटिंग्स एडिट की हैं, 2 टेस्ट एडिट किए हैं, एंट्रीज की हैं। ओके, इसको टेस्ट करके और
इधर डंप मार दूंगा बेंच। नाक में चढ़ती है। rubbing alcohol is injurious to health, literally. Film CI. What the fuck? PNPM CI तो है, वन CI, CI. यार मैंने ऐप तो अच्छी बनाई है ये, लेकिन यार रीच ही नहीं मिल रही इस ऐप पे मेरे को। मैं मेरे हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि मेरे को जो कुछ चाहिए सब कुछ अवेलेबल है इन फ्रंट ऑफ मी। कैसे भी एडजस्ट करूँ, कितना भी एडजस्ट करूँ, मेरे लिए तो सही है। अरे भाई टाइप चेक में इतना टाइम लग रहा है भाई, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्विट क्विट दिस ऐप, क्विट दिस ऐप टू, क्विट दिस ऐप टू, फ्री अप सम मेमोरी, दिस ऐप टू। स्पॉटिफाई नहीं चाहिए, पासवर्ड्स नहीं चाहिए, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, वाओ वाओ। कैलेंडर कैलेंडर भी नहीं चाहिए, बाद में देखते हैं। व्हाट्सअप व्हाट्सअप तो चाहिए यार, ऊपर मत जाना, व्हाट्सअप व्हाट्सअप ऊपर मत खुलना, हाँ इस पे। यार इतना स्लो कैसे चल रहा बेंच। यार मैं कुछ करूंगा तो विवाद हो जाए। क्या भाई, सीपीयू से मेरी सिर्फ इतनी है, 40% आइडियल सीपीयू पड़ा है भाई, फिर भी इतना टाइम लग रहा है भाई। वो 60% यूज करो ना, मतलब व्हाट द फक इज विद दिस एफिशिएंसी। मैकबुक ऑफिशियली एफिशिएंट नहीं है। सोचा था एफिशिएंट होते हैं तो मैकबुक लेता हूँ, बेंच एक 2K स्क्रीन ऐड कर दो और लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दो, इसकी गांड पड़ जाती है। और ये एसी में है, जो बिना एसी किया तो इसका समझ लो। हाँ। ओ ओ जाना, सपनों में रोज आए, जिंदगी में आना सनम। ये देखो यार, ये देखो, ये बना के रखा है मैंने बिटकॉइन को। पहले लो, फिर अप, ये सबको पावर बनाया और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। इट्स लुकिंग प्रीटी गुड फॉर अ बाय, नॉट गोना लाई। लेकिन पता नहीं है, डर भी लग रहा है, गांड पड़ रही है कि जब नीचे गिरा तो चड्डी बेचनी पड़ जाएगी, लेकिन ऊपर गया तो सोने की चड्डी आएगी, सोने की। ये देखो यार, कितना बुलिश मूवमेंट, बुलिश होल्ड किया फिर बुलिश। पता नहीं है ऐसे ही कंटिन्यू करेगा कि क्या। मंथली में तो परफेक्ट लग रहा है भाई, मंथली में देखो परफेक्ट। कहाँ गए मेरी लाइंस, मेरे लेवल्स नहीं दिख रहे बेंच पे। वीकली में देखो,
ये चोच बना रहा है, ये देखो नीचे भी ट्रेंड लाइन बन रही है 3 वाली, और ये चोच बना रहा है इधर। लेकिन ये जो बाय 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 ग्रीन 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 है ना, ये ग्रीन 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 ऐसा ऐसा है, वैसे ऐसे ग्रीन 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 ग्रीन, सो इट्स लुकिंग गुड। मेरा एक्सपेक्टेड है कि 150 तक तो आराम से चला जाएगा, 160 तक भी चला जाएगा, 70 180। और जिस हिसाब से हालात लग रहे हैं, ट्रम्प की प्रिंटिंग और वॉर और ये सब, 250 के टच का कोई बड़ी बात नहीं है इस वाले में, क्योंकि ये जो गिरा है ना ये वाला भाई, ओए पूरी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही उधर, व्हाट द फक। Let me just see this screen recording thing. डिस्प्ले कैप्चर नो, विंडो कैप्चर नो। यार डिस्प्ले कैप्चर करनी है ना, लेकिन मैंने उधर उधर डेस्कटॉप चेंज किया तो वो भी रिकॉर्ड, वो दूसरा डेस्कटॉप भी रिकॉर्ड होना चाहिए। व्हाट द fuck? तो ये कहना चाह रहा है मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैंने चेंज कर, व्हाट द फक, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रही, स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही। मैंने स्क्रीन पूरी चेंज कर दी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रही। पता नहीं स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा। मम्मी क्यों नहीं काम कर रहा है ये भाई, विंडो कैप्चर क्यों नहीं कर, स्क्रीन कैप्चर मीडिया कैप्चर, ये कैप्चर कौन सा लगाया मैंने, मैं कोई स्क्रीन कैप्चर ही लगाया हुआ है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा अच्छे से। अब कर रहा है, अब कर रहा है, अब कर रहा है, स्विच भी काम कर रहा है, करेगा। हाँ कर रहा है, अब कर रहा है, अब कर, ये देखो वीकली पे क्या अच्छे बाई ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये ऐसा बाई ट्रेंड लग रहा है मेरे को ये देखो कुछ तो ऐसे हुआ था, फिर बुलिश बुप बुप, ऐसे ही जाएगा बुप बुप एंड बुप, तीन 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 लेग्स में 250 के तक जा सकता है। ये जो लो है, मुझे ये लो लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो लो था वो इसके बराबर था, और ये वाला लो जो है वो इसके बराबर है। दैट्स माय एनालिसिस एनीवेज। एनीथिंग कैन हैपन, इट्स झंझर की चूड़ी गिल रो रो ये भी पागल सी हो रे, आर लाडले आरण दे। एक बार स्ट्रीम चेक करनी पड़ेगी मेरे को, क्या fuck हो रहा है। तकिया लेके आना चाहिए था, कंफर्टेबल रहता।
बिल्डिंग। मैं वो अपनी ऐप की मेन वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे थोड़ा काम करना चाहिए। नहीं, अच्छी बनानी चाहिए। मेरे को एक्चुअली यूआई बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी जीरो। तो चैट जीपीटी ने जैसे बना के दिया, मैंने चेप दिया बस। भाई माइक्रो स्ट्रेटजी क्यों गिर रहा है? अब बिटकॉइन ऊपर वैसे मैंने बहुत इन्वेस्ट किया स्ट्रेटजी में। दुख होता है, दर्द होता है। सब पोर्टफोलियो आधा हो जाए, 70% गिर जाए, फिर भी आप एवरेज करते रहो, बहुत दुख होता है। लेकिन आई एम ग्लैड अबाउट एट द बॉटम। कुछ और करना चाहिए था लेकिन खर्चे। मैं सोचा था यार लोन लेने का, फायदा नहीं है इतना रिस्क लेके। जब रात की नींद उड़ जाए तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से डिप्लॉय हो गई है। Let's create a new layout. वो सेव भाई बग है वो सेव वाला बग आ गया का पता नहीं यार। बग्स यार कभी खत्म क्यों नहीं होते? ये फालतू के डिलीट करता हूँ यार मैं। डिलीट का मैंने ऑप्शन रखा है इधर, लेआउट डिलीट का ऑप्शन नहीं है। मैनुअली डीबी में जाकर करना पड़ेगा अभी तो। डिलीट। चलो डालता हूँ मैं, यूआई में डाल देता हूँ ना ये ऑप्शन भी। 5 मिनट लग रही है डालने में, क्या ही जा रहा है। तब तक एक नया लेआउट बनाते हैं। 6 charts, give me 6 charts. इसमें यूजर एक्सपीरियंस है नहीं मेंशन, ना लोडिंग आ रही है ना कुछ हो रहा है। पता नहीं रिक्वेस्ट भी गई है सर्वर तक करने नहीं गई। एक तो इतना लैग कर रहा है ना भाई, देखो डिले देख रहे हो, होवर का कितना डिले। शिट भाई, मेरे को 1080p स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। ये सब हटा रहा हूँ भाई मैं, किधर से होगा? ये हटा रहा हूँ भाई। ऑर्डर बुक भी हटा रहा हूँ पूरी। सिर्फ 6 चार्ट्स रहेंगे। वैसे भी ये वाला कॉलम भी बढ़ा देते हैं बस। हो गया, इसको सेव कर दें, फेवरेट कर देते हैं। भाई पैसे ना दो तो कितना स्लो सर्वर चलता है। मेरे को अभी भी नहीं पता स्ट्रीम मेरी स्मूथ चल रही है या नहीं चल रही। कई बार तो स्मूथ हो जा रहा है, अगर मैं माउस को नहीं हिला रहा तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन अगर मैंने माउस हिला दिया तो सब लैग कर रहा है। पता नहीं क्या मैकबुक का बग है, क्या है, कुछ है। ये देख सब लैग होने लग गया।
और मैंने रोक दिया, अब सब सही चलने लग गया। व्हाट द फक डूड, व्हाट द फकिंग फक इज दिस। चलो सिंबल चेंज को कर देते हैं इनेबल, अलाउ सिंबल चेंज, एंड ये हो जाएगा रिफ्रेश। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी हैशटैग, इधर आने जो। और कौन सा है लगाए, और कौन सा लगाए, ये तो बंद कर देता हूँ। वो क्या, एनवीडिया लगाते हैं। एनवीडिया और नेटफ्लिक्स लगाते हैं अपन। एनवीडिया और नेटफ्लिक्स लगाते हैं, बाकी के और देखते हैं कुछ स्टॉक्स। पता नहीं है लोकल स्टेट है कि ग्लोबल स्टेट है ये, छुपाने वाली है मेरी मर्जी। हाँ ग्लोबल है, अच्छा है, ये सेव हो जाएगा। सेव कर देता हूँ, यहाँ पे जाएगा एनवीडिया, और यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या था, नेटफ्लिक्स। कोई एक माइनस कर देते हैं। नीचे क्या रखा है, ऐसे वो कर देते हैं। और कौन से स्टॉक्स उठाए हैं, लेट मी चेक, चेक ब्रो, चेक। Nasdaq, stock list, companies, Nvidia is top man, एप्पल से भी ऊपर गया नाउ, नाइस। मोमेंटम वाले कौन से हैं, अल्फाबेट, एएमडी, एएमडी भी रखते हैं, एएमडी भी अच्छा स्टॉक है, AMD रखते हैं। यहाँ पे मेरे को एक और सेटिंग लगानी चाहिए, लाइक यूएस चार्ट्स, लाइक समथिंग, ताकि मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाए इधर चेंज करना, क्योंकि मेरे को हर बार ये मैनुअली डालने पड़ेंगे हर एक नाम। हम्म,
गई भाई। अरे यार ये लेंथ भी क्यों नहीं जा रहा जो मुझे चाहिए, वो स्क्वीज आउट नहीं हो रहा भाई। I guess this is the best I'm gonna get. मेरे को चाहिए भाई कैंडल्स थोड़ी पतली हो और कैंडल्स के बीच में थोड़ा गैप हो। चिपकी चिपकी कैंडल्स मेरे को अच्छी नहीं लगती। यार अगर मैंने अब इधर से चेंज किया 1 मिनट पे, इधर ऐसे ही करना है। ओके AMD कर लिया मैंने ऐड। क्या करें? AMD भाई 15% जब मारा है। The fuck? AMD को एक बार डेली पे देखने दो भाई, क्या हुआ है? यो 200 से सीधा 400। भाई मैंने इसको 111 पे सेल किया था। व्हाट द फक, आई शुड हैव होल्डेड इट। लेकिन अमाउंट बहुत छोटा था यार। लाइक कितना था अमाउंट? लाइक 100 बक, सिर्फ 100 बक्स थे। लेकिन 100 अभी 400 होते बेंचोद। अब माइक्रो स्ट्रेटजी में डाल दिया, वो पेन का लोड़ा 70% क्रैश कर गया। चोद किस्मत। Anyways, लैम रिसर्च ग्रुप ये क्या है भाई, पता नहीं। आर्म होल्डिंग अमेरिकन डिपॉजिट शेयर, वॉर के कुछ होंगे, मिलिट्री के स्टॉक्स। ये ले लेते हैं LRCX। फैंग देखते हैं। अरे लिक्विडिटी ही नहीं है फैंग में तो भिंच। फैंग में तो लिक्विडिटी ही नहीं है। APP देखते हैं। इसमें भी लिक्विडिटी नहीं है। टेस्ला टेस्ला ले लेते हैं फिर, या मेटा, अमेजोन, मेटा ही ले लेते हैं भाई। These are the stocks. First glance move, I would be trading in. Just looking at this information is I'm interested in Meta, LRCX, AMD, and Nvidia. Other stocks are just gibberish today, I guess. Nvidia is looking good for a buy, but I guess it's too late to enter. I don't know. AMD looks good for a entry for a buy for now, but it's not a good entry because it can easily break down even more. The day is low.
and the LRCX going up. I would love to short it if I see something. I will short LRCX because it's not strong. It's weak. AMD looks good. Let's wait for a couple of minutes. I will read some chapters. Reading this Angels and Demons. Not many children could say they met their father, but Victoria Waiter could. She was 8 years old, living where she always had known Friango DC Island, a Catholic orphanage near Florence, deserted by parents he never knew. It was raining that day. The nuns had called for her twice to come to dinner, but as always she pretended not to hear and lay outside in the courtyard, staring up at the raindrops, feeling them hit his body. Oh my god, I do. I cannot do it. This feels so high. Um, hit about it, trying to guess where one could land next. The nuns called again. The nuns called again, threatening that pneumonia might make an insufferable and stroke child a lot less curious about nature. I can't hear you, Victoria thought. She was shocked to the bone when the young priest came out to get her. She didn't know him. He was new there. He was new there. Victoria waited for him to grab her and drag her back inside, but he didn't. Instead, to her wonder, he lay down beside her, soaking his robes in a puddle. They say you ask a lot of questions, the young man said. Victoria scolded. Are questions bad? He laughed. Guess they were right. What are you doing out here? Same thing you are doing, wondering why raindrops fall. I am not wondering why they fall, I already know. The priest gave her an astonished look. You do? Sister Francis says raindrops are angels' tears coming down to wash away our sins. What the fuck? Wow, he said, sounding amazed. So that explains it. No, it doesn't. The girl fired back. Rain does falls because everything falls. Everything falls, not just rain. The priest stretched his head. NVIDIA just would have looking perplexed. You know, young lady, you are right. Everything does not fall. It must be gravity. It must be what? He gave her an astonished look. Astonished. You haven't heard of gravity? No. The priest shrugged sadly. Too bad. Gravity answers a lot of questions. Victoria sat up. What's gravity? She demanded. Tell me. The priest gave her a wink. What do you say? I tell you over dinner. The young priest was Leonardo Vetra. Although he had been an award-winning physics student while in university, he had heard another call and gone into the seminary. Seminary क्या होता है? Christians का होता है. Leonardo and Victoria became unlikely best friends in the lonely world of nuns and regulations. Victoria made Leonardo laugh and he took her hand under his wing, teaching her the teaching her that beautiful things like rainbows and the rivers had many explanations. He told her about light, planets, stars, and all of nature thought the eyes of both God and science. Victoria's innate
intellect and curiosity made her a captivating student. Leonardo protected her like a daughter. Victoria was happy to she had never known the joy of having a father when every other adult answered her questions with a slap on the wrist. Leonardo spent hours showing her books. He even asked what her ideas were. Victoria prayed Leonardo would stay with her forever. That one day her worst nightmare came true. Father Leonardo told her he was leaving the orphanage. I am moving to Switzerland, Leonardo said. I have a grant to study physics in at the University of Geneva. Physics, Victoria cried. I thought you loved God. I do very much, which is why I want to study his divine rules. The laws of physics are the canvas God laid down on which to paint his masterpiece. That's some good words. Victoria was devastated, but Father Leonardo had some other news. He told Victoria he had spoken to his superiors and they said it was only if Father Leonardo adopted her. Oh, she was adopted. Would you like me to adopt you? Leonardo asked. What's adopt mean? Victoria said. Father Leonardo told her. Victoria hugged him for 5 minutes, crying tears of joy. Oh, yes, yes. Ah, okay, okay. Look at this. AMD is good for sale. I will very likely take a trade. Uh, but I'm not doing it on like I don't have money to do it. But if I had, I would have taken some amount of trade here. I don't know what commissions are on US stocks. Like 1 to 1 ratio is good enough, I guess. 1 to 2 is better. And this looks good to break low, then going up, let it come down a little, then buy that too. This looks good for a buy to break the low now and up with the line. We'll break out from the line, I guess. Other than it's moving in a channel, I'm not interested. If it's moving in a channel, it's low is glory. Like it has to, like it's predictable, but the commissions are pretty high actually, I guess. How much is momentum? 3%. Like I don't know how much commissions are in US stocks actually. Back to the book, I guess. Where was I? Oh, yes, yes. Leonardo told her he had to leave for a while and get their new home settled in Switzerland, but he promised to send for her in 6 months. भाई ये इंग्लिश कई बार सेंस नहीं बनाती like sentences. Why do you have to write sentence like this in this format? Make it easier to read, man. That was the longest wait of Victoria's life, but Leonardo kept his word. 5 days before her ninth birthday, Victoria moved to Geneva. She attended Geneva's international school during the day and learned from her father at night. 3 years later, Leonardo Pedra was hired by son Victoria and Leonardo relocated to Wonderland, the likes of which the young Victoria had never imagined. Victoria Vereta body felt numb as she strode down the LHC tunnel. She saw her
muted reflection in the LHC and seemed her father's absence. Normally, she existed in a state of deep calm in harmony with the world around her. But now, very suddenly, nothing made sense. The last 3 hours had been a blur. It had been 10 a.m. in the Balearic Islands when call came through. Your father has been murdered. Come home immediately. Despite the sweltering heat on the deck of the Divine Boat, the words had chilled her to the bone. Caller's emotionless tone hurt as much as the news. Now she had returned home, but home to what? Sir, her world since she was 12 seemed suddenly foreign. Her father, the man who had made it magical, was gone. Deep breaths, she told herself, but she couldn't calm her mind. The question circled faster and faster. Who killed her father and why? Who was this American specialist? Why was Kohler insisting on seeing the lab? Kohler had said there was evidence that her father's murder was related to the current project. What evidence? Nobody knew what we were working on, and even if someone found out, why would they kill him? And as she moved down the LHC tunnel towards her father's lab, Victoria realized she was about to unveil her father's greatest achievement without him there. She had pictured this moment much differently. She had imagined her father calling certain top scientists to his lab, showing them his discovery, watching their awestruck, awestruck faces. Then he would beam with fatherly pride as he explained to them how it had been one of the Victoria's ideas that had helped him make the project a reality, that his daughter had been integral in his breakthrough. Victoria felt a lump in her throat. My father and I were supposed to share this moment together, but here she was alone. No colleagues, no happy faces, just an American stranger and Maximilian Kohler. Maximilian Kohler, Dale Koning. 1v1 तो टारगेट हिट हो गया है, पता नहीं और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से तो जाएगा, पता नहीं एमडी इतना ऊपर क्यों है, कुछ तो न्यूज़ है भाई। एंड नेटफ्लिक्स भी ऊपर जा रहा है और माइक्रो स्ट्रेटजी खराब लग रहा है अभी, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। मेटा काफ़ी ऊपर चला गया भाई, लाइक 608 पे था वो जो मैं स्ट्रीम चालू किया, 616 पे चला गया। लाइक हाउ मच, लाइक लगभग 1.5 to 2% ऑफ हो गया, क्योंकि 6.1% है, तो 6 पॉइंट 2.8 पॉइंट ऊपर गया है, तो 1.2%, 1.4%, 4 नहीं 3.5, 1.35%। Let's see actually how much it is. 1.4, pretty close, pretty close, pretty close. Let's move. Even as a child, Victoria had disliked the man, even although she eventually came to respect his potent intellect. His icy demeanor, demeanor always seemed inhuman. The exact and antithesis of her father's warmth. Kohler pursued science for its
immaculate logic, her father for its spiritual wonder, and yet oddly there had always seemed to be an unspoken respect between the two men. Genius, someone had once explained to her, accepts genius unconditionally. Genius, she thought, my father, dead, dead, dead. The entry to Leonardo Vetra's that was a long, sterile hallway paved entirely in white tile, and Langdon felt like he was entering some kind of underground insane asylum. Living in the corridor was dozen of framed black and white images. Although Langdon had made a career of studying images, these were entirely alien to him. They looked like Catholic negatives of random streaks and spirals. Modern art, he mused. Jackson Polgana and the scatter plots. Victoria said, apparently nothing. Langdon interest. Computer representations of particle collisions. That's the Z particles, she said, pointing to a faint track that was almost invisible in the confusion. My father discovered it 5 years ago. Pure energy, no mass at all. That's the dark matter, dark energy, right? Negative matter, whatever they call it. Pure energy, no mass at all. It way well to be the smallest building block in nature. Matter is nothing but trapped energy. Yeah, actually, matter is a trapped energy. If you look at it, string theory says the same things. Strings are like waves, and they are moving. That's energy. Matter is energy. Yeah, it is. Langdon cocked his head. Sounds pretty insane. He gazed at the tiny street photograph and wondered what his buddies in the Harvard physics department would say when he told them he would spend the weekend hanging out in the Large Hadron Collider admiring Z particles. Victoria Kohler said as they approached the lab's imposing steel door. I should mention that I came down here this morning looking for your father. Victoria flushed slightly. You did? Yes, and imagine my surprise when I discovered he had replaced some standard keypad security with something else. Kohler mentioned to an intricate electronic device mounted beside the door. I apologize, he said. You know how he was about privacy. He didn't want anyone but the two of us to have access. Kohler said, fine, open the door. Victoria stood for a long moment, then pulling a deep breath, she walked to the mechanism on the wall. Langdon was in no way prepared of what happened next. Victoria stepped up to the device and carefully aligned her right eye with the protruding, protruding, protruding lens that looked like a telescope. Then she pressed a button. Inside the machine, something clicked. A shaft of light, a shaft of light oscillated back and forth, scanning her eyeballs like a copy machine. It's a retina scan, she said. Infallible security authorized for two retina patrons, only mine and my father. Robert Langdon stood in horrified revelation. The image of Langdon came back in gruesome detail. The bloody face, the solitary hazel eyes staring back, and the empty eye socket. He tried to reject the obvious truth, but then he saw it beneath the scanner. On the white tile floor, faint droplets of skin, some dried blood. Ooh. Victoria thankfully did not notice. The steel door slid open and she walked through. Collar fixed Langdon with an
adamant stare. His message was clear. As I told you, the missing eyes were a higher purpose. The woman's hands were tied, his wrists now purple and swollen from shafting. The mahogany skinned Hussein lay beside her, spent admiring her naked thighs. He wondered if her current slumber was just a deception, a pathetic attempt to avoid further service to him. He did not care. He had reaped sufficient reward. Seated, he sat up in bed. In his country, women were possessions, weak tools of pleasure, chattel to be traded like livestock, and they understood their place. But here in Europe, women find a strength and independence that both amused and excited him. Forcing them into physical submission was a grateful gratification he always enjoyed now. Hmm, interesting. देखते हैं क्या होता है. Still on thread. Now, despite the contentment in his loins, the Hassan sensed another aspect growing within him. He had killed last night, killed and mutilated, and for him, killing was like heroin. Each encounter satisfying only temporarily before increasing his longing for more. The The exhilaration had worn off, the craving had returned. He studied the sleeping woman beside him, running his palm across her neck. He felt aroused with the knowledge that he could end her life in an instant. What would it matter? She was Subuman, a vehicle only of pressure and service. His strong fingers encircled her throat, severing her delicate pulse. Then, fighting desire, he removed his hand. There was work to do, service to a higher cause than his own desire. As he got out of bed, he relived in the horror of the job before him. He still could not fathom the influence of this man named sinners and the accident brotherhood he commanded. Wondrously, the brotherhood had chosen him. Somehow they had learned of his loathing and of his skills, how he would never know. Their roots reach wide. Now they had bestowed on him the ultimate honor. He would be their hand, he would be their hands and their voice. He would be in their hands and their voice. नहीं आना चाहिए भाई. In कहाँ गया? I mean, what the fuck is the grammar? पता नहीं है. ठीक है, नहीं है, पता नहीं. Their assassin and their messenger, the one his people knew as Mark, the angel of truth. ये वाला चैप्टर बता रहा है. 8 पेज का ये वाला चैप्टर. What's happening? Let me see. ट्रेड तो ये बेकार जा रही है, तो क्लोज ही कर देनी चाहिए एक्चुअली.
I would take a buy in this actually. Keep a small loss, quite big profit here. 300 looks like a pretty psychological level. It seems good. If it declines from here, I would take another trade actually, like 101 trade, 1 ratio to 1 ratio. But it will not. I would have taken some profit here, some profit to cover my charges and all. If I break even, I guess, or maybe like 50% or 75% of trade, because I didn't had a perfect target, but I knew it would go down, so I would have covered a bigger portion of my trade. Nvidia looks really good on buy side. What I'm saying is MicroStrategy, it has potential of going up, but I would only buy if it comes down first, because it should come down. The buying power is not there enough, not enough buying power from here to going up. Look at Meta. Meta is fucking just fucking. Man, look at my dark circles. What the fuck, bro? What the fuck? Yo. If AMD have to fall, it's a good spot to fall from. Otherwise, it's switching trends. बुक इंटरेस्टिंग तो है यार, लेकिन ज़्यादा पेज बनाने के चक्कर में एक्स्ट्रा फालतू की इंफॉर्मेशन डाल के रखी है जो स्टोरी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है इतनी, और जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मोटी बुक बनानी थी तो डाल दिया इन्फॉर्मेशन, बस डाल दो, खींचना है। वही हो जाता भाई ऐसे पढ़ना, फिर फालतू की जो इन्फॉर्मेशन लोग। अब मेरे को वो नॉवल ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक रियल लाइफ थिंग्स। एक्शन और साइंस वाली ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो रियल ह्यूमन बीइंग वाली चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है।
like normal stuff, but emotional. Mm, I would love to buy on Meta, man, but there is not a clear target. Okay, it's gonna break a pretty major level. So like 630 is the target actually for Meta. If it breaks 620, it will go to like 630. So that's my target actually. And I think we should stop it if it doesn't go down from here. It's the last candle I'm gonna watch for. Because after this, it just doesn't feel worth it for the risk I'm taking. If a big red candle comes, I will still maybe put some more position, but I won't. Otherwise. I'm watching now better for the 630 target if it can be achieved today. Or maybe I should look for a sell. Hmm. But the buying pressure is a lot better, man. Look at the buying, just straight up bullish buy to 620 from 600 to 620, like 3% up. Yeah, I am out of this trade, AMD trade. It's done. I will still interested in sell in AMD, but not a buy in AMD. There is no setup for a buy. Mhm. This looks pretty promising. LRCX trade. Uh, Meta came down. Okay, okay. It's coming. Meta strategy is coming down. Okay. Mm, I'm tired. I need some sleep. Ah, mm. Now AMD is falling. What the fuck, bro? Like, getting me out of my position. Now you're falling. What the fuck? Anyway, I'm not falling for it this time. Maybe I should fall. I don't know. There is no clear target. Maybe there's no clear target. It's such a big gap up, like 15% gap up. It's a big gap up, man. 10 15%. There are no targets actually there.
Big market cap, large gap up, it's just gonna fluctuate. Oh, I use these man paper clips for keeping track which line I am at. Pretty convenient thing to do. Like you can clip it on the exact line you are at, the exact paragraph, and so it's much easier to follow through instead of remembering which line you are at. Like man, how many pages are here? It's like 600 man. I read a novel of like 400 pages and it was really interesting. It was Norwegian wood, right? Uh, Japanese novel. Pretty good. Connected a bit. Mm. Just normal people having traumas and dying. Beard doesn't look good on me. Oh, what? My posture is going up with no downside. What the idea anticipated that all. It should be a fake out actually. I don't know. AMD is looking fucking good for a sell. And I'm just gonna sell it. I don't know how much it's gonna go down. I don't even know. But it looks fucking so good for a sell. And I know it's gonna just took my sell. But my body is like, my brain is like, just take it, just take it, just take it, just take it. But I really should not take it. This looks good. This looks pretty good. This looks really good. But not much of a downside actually, I guess. But there's a higher possibility of it's going down rather than breaking a major level of 620. And even if it breaks the major level of 620, I'm just gonna reverse buy it actually. So it's like a win-win actually. Let's say 1.35 is reward. Oh, let me get some water and I will come back in a few minutes.